सो आज की क्लास में हम सुपर हैच सीखेंगे एंड हाउ टू डू दी सुपर हैच। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आप जाएंगे एक्सप्रेस टूल्स में, यहाँ पे है सुपर हैच। इस सुपर हैच पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यू कैन सुपर हैच दीज थिंग्स। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट इमेज एंड द ब्लॉक। सो इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद में कोई भी इमेज ले लेंगे आप। लेने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे insertion point will be asked and then you'll have to take a particular size. अगर आप ये साइज लेंगे इसके अकॉर्डिंग होगा, ये साइज लेंगे इसके अकॉर्डिंग इसमें फिल होगा. And then yes, and then after internal point, so I'll click inside this particular box and then enter again. So it will simply hatch this logo of my institute in this space. So this was the super hatch for the image, for the images, any kind of image. If you want to do the finishing of the floor or the elevation, that is the wall and everything, this can be done with the help of Superhatch. दूसरा इसमें हम करके देखेंगे। इसके लिए मैंने एक सर्कल लिया। सर्कल लेने के बाद में एक पॉलीलाइन लेता हूं मैं। पॉलीलाइन लेने के बाद में इस तरह का कोई शेप बनाता हूं। स्ट्रेच कमांड से इसको मैं ऐसे कर देता हूं एंड देन आफ्टर again I'm going to make a shape over here and then again this way and then one circle over here like this. Now I'll make the block, so I'll name it as 1 and then after select them all, it's done, it's showing here. Again I'll do the block and then after I'll name it as 2 and then select these all together, it's coming, it's done. Now I'll go to the super hatch and then after I'll go to block this time because I want the block to be filled in these two rectangles. So block, the first block is the 1. So 1 number I want to fill here. So it's asking specify the insertion point. So I'll click inside. And then after I'll have to hit enter 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. And finally, it will again ask specify insertion or internal point. So I'll click inside and enter is done. Again, I'm going to do this. So go to the super hatch and then block. This time block number 2 I'm going to use. And it will ask you the insertion point. So take inside and then after 5 times enter. 1, 2, 3, 4, 5. And again click inside this particular rectangle or the box and enter. So this is how you can achieve both super hatch of the image and the geometry. Hope you have understood. Thank you very much for watching this video.